pollution are easy to identify, and they have single source, while non-point pollutions they are difficult to identify. And why difficult to identify? Because they are widespread. वहाँ पर वो एक्टिविटी उस एरिया में इज वेरी कॉमन, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड ट्रेस बैक टू द ओरिजिनल perpetrator. I don't know what is this word. I mean, who is actually responsible for that? So, moving ahead, today we'll go through sources and causes of groundwater contamination. Okay, बहुत easy topics हैं, but we will go through once, and because it's there in your syllabus. So groundwater mostly it become contaminated because of the human activity. Water sometimes also receives contamination through soil and rock interaction. So there are two ways that groundwater can contaminate. If it is human induced, we call it anthropogenic, and if it is because of the soil horizon or because of the geological interaction, we call it we call it geology oriented or geogenic. Gen means origin is geology. So of course this is natural phenomena. Extent of human activity, extent of human activities cover residential, municipal, commercial, industrial and agricultural activity. इसके अलावा और भी कुछ जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है, और एंथ्रोपोजेनिक लार्ज टर्म इसके लिए क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, राइट. सो दे कैन अफेक्ट ग्राउंड वाटर क्वालिटी. A source of groundwater contamination does not always mean cause of pollution. Cause of pollution often lies in unscientific application, right? As I said somewhere else in environmental impact assessment studies, that there is a constant fight between environmentalists and the developers, right? City development or city planners, they want to develop the city. Although environmentalists, they come up and say, no, this is going to degrade the environment. So उसके context में ये बात कही गई है that a source of groundwater contamination does not always mean like having an industry, having an industrial setup or having a landfill does not always mean that it will cause pollution. But given that the procedure or scientific procedure should be followed for the safeguard. अब यहाँ पर आ जाता है साइंटिफिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं for natural or environmental safeguarding. So if that are placed properly, then they will reduce the chances of groundwater or any environmental degradation, right? So उस context में बात कही है that it is not always mean causing pollution. Cause of pollution often lies in unscientific application. Landfill अपने आप में will not contaminate until you will have a bad landfill or a badly designed or a landfill without engineering design. तब वो जाकर के source of groundwater contamination बनेगा. Now, contaminants may reach groundwater from activities on land surface, and वो activities could be anything, right from the oil spills or the spills from industrial waste. There are tanks placed subsurface, so septic system that may leak, और there are underground petroleum storage. ये जो petrol stations होते हैं ये for the safety they put their storage tanks in which they have
sometimes 50,000 liter or more than that storage capacity of a petrol pump, right? So वो बहुत बड़े storage tanks को ground में at least 5 to 10 meter 5 meter at least वो of course एक pit बना करके और एक underground storage बनाते हैं. Now with age there are chances of leakage and spillage from those. And okay, because it will not be covered somewhere, I'll tell you here. And these days, quite, environmental agencies are quite vocal for groundwater contamination from fuel station. So in developed countries, the fuel stations are given with very strict environmental permits. साल में 2 बार उनको अपना एनवायरमेंटल ऑडिट कराना होगा. उसमें एनवायरमेंटल ऑफिसर आकर के चेक करता है लीकेज है कि नहीं है. नाउ देयर आर इम्प्रूव्ड टैंक. ये टैंक पहले तो सिंपली लोहे के और यानी जो भी मटेरियल था उसके टैंक होते थे. नाउ इट टर्न्स आउट टू बी हाई डेंसिटी पीवीसी material के tanks होते हैं, and they have early leakage detection system. So this much has been asked by the environmental agency to the fuel station owners, right? कि भाई अगर कोई लीकेज हो तो लीकेज का पता चल जाए. And also they need to maintain the record of petrol, how much they sold in a day and what जो बैलेंस कितना उनके टैंक में बचा है, टोटल कितना था, आज कितना उन्होंने सेल आउट किया. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट्स. नाउ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ये होता क्यों है यानी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज? Because some substance found naturally in rock and soil, such as iron, manganese, arsenic, chloride, fluoride, sulfate, radionuclides, right? ये चूंकि ऑलरेडी सॉइल या एक्यूफर में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर या किसी लार्जर एरिया पर ऑल टुगेदर और सिंगल. So when groundwater percolates down and it stays and it enters into aquifer, all along the journey it comes in contact with, and then finally what is the aquifer material. Aquifer itself has got these are rich in these or not. So prolonged interaction of groundwater with these naturally found elements will further increase the concentration in groundwater. So if a groundwater is not contaminated today, it may contaminate with time after prolonged interaction with these elements if present in the aquifer. Other naturally occurring substances such as decaying organic matter can move in groundwater as particle. Whether any of these substances appear in groundwater depends on local condition. As I said, it is a local phenomena that at some part, वो आ रहा है नीचे, we'll discuss that. Some substance may pose a health threat if consumed in excess quantity. Other may produce an undesirable odor, taste, or fluoride or color. For example, fluoride. Fluoride is present in some rock type, right? And fluoride concentration are both. It is useful and it is harmful. Useful for the proper functioning of the bones, right? And once
it is more than that. greater में कुछ भी हो सकता है, greater than 1.5 milligram per liter equals to, maybe if it is 5 milligram per liter, then prolonged consumption of water having high fluoride content may decay your bones, and firstly it will impact on it will decay your teeth. The same thing happened in London sometimes in 1960s or 70s, while the municipal water supply authority, they thought of adding fluoride into the water supply, and the consumption of prolonged consumption of that, the Londoners they got their teeth their teeth become decayed or yellowish. Drinking guidelines are set to ensure preventing undesirable impact of concentration of different parameter that forms water quality on human health. तो यहाँ पर ड्रिंकिंग गाइडलाइंस का रोल आ जाता है. Drinking guidelines are set basically to ensure the proper human health, right? It is a subject of continuous evolving and continuous research that which particular element is causing undesirable impact on human health, right? For example, in 1950s or 60s, it was not known that some of the heavy metals are cancerous. But because now with time they get to know, they reduce the concentration or intake concentration of these heavy metals from the guideline. राइट. सो ऊपर जो हम बात कर रहे थे उसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यानी जियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है ग्राउंड वाटर, उसका बेस्ट एग्जांपल है द आर्सेनिक प्रॉब्लम. आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ग्राउंड वाटर्स ऑफ बंगाल. अब आप ये भी देखें, फर्स्ट इट वाज आइडेंटिफाइड इन वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ बांग्लादेश. And वो भी इसलिए it was indirectly identified because some villages have got skin issues. तो skin cancer और इस तरह की बीमारियां जब बढ़ी तो indirectly फिर yes, I mean to find out the cause they checked the water. तो उसमें निकला arsenic concentration high. So it was then it was known that because of the arsenic they are getting this skin cancer. Now of late ये ट्रेस बैक किया तो ये वेस्ट बंगाल में भी कंसंट्रेशन इसके हाई निकले आर्सेनिक के. And recently, not recently, in the last decade, we find out that parts of eastern Uttar Pradesh are having some patches in Balia or Basti. Some of the wells they found contaminated with arsenic. That means it is present in patches. So in West Bengal, where it is widespread, it may be called as non-point pollution, while for Uttar Pradesh, this may be a point pollution because it is scattered. There is no trend. Same uranium concentration these days. Focus is on uranium concentration on groundwater. JNU professors, they are involved in the study and they find out that we have quite high uranium concentration in groundwater. I mean more than the desirable or the permissible limit. अच्छा, ये हो गया. तो these are all geology oriented, so we call it geogenic. अब जैसे हम जानते हैं ग्राउंड वाटर की इवोल्यूशन में, once it starts from the rain water is very pure and the TDS is very less. Okay,
and calciums or the alkaline calcium mostly and magnesium are either equal or more than sodium and potassium. But once groundwater evolves means once it enters into and then finally it travels in aquifer, and after prolonged interaction जो कैल्शियम मैग्नीशियम टाइप ग्राउंड वाटर होता है दैट टर्न्स आउट वो चेंज हो जाता है सोडियम क्लोराइड में. लास्ट फ्यू टर्न्स पे हमने बताया था कि किस तरह से ग्राउंड वाटर इवोल्व होता है. ठीक है. अब सोडियम क्लोराइड कोस्टल एरियाज में often we have NaCl, high concentration of NaCl, and also in arid region. अब arid region में क्या होता है that we have very little rain, and because of very little rain, groundwater do not dilute it because replenish because of the episodic rain. यहाँ central गंगा plain और यहाँ पर क्या होता है that you have frequent rain, and that frequent rain with good conducive soil allows rainfall to percolate as groundwater recharge. अब वो क्या करता है that fresh water meets the aquifer water which is slightly mineralized over the time. अब नया splash of water which enters into ये change कर देता है इसकी quality को, और change किस तरह से करता है dilute करता है. Now this phenomena is absent in arid region. So the areas with little rainfall gets mineralized over time. And why they get mineralized? Due to lack of rainfall recharge or very less rainfall recharge, because rain already is very less. Right? Arid regions are those regions which are having rainfall less than 200 mm. And there are areas which often, for example, United Arab Emirates, they do not per year. And what is the average rain here in Central Ganga Plain? Yes, someone come up with a figure. Shehbaz, Azka, Kumail. Sir, around 400 to 600 mm. 400 to बहुत less. Yeah, it is, but it is it ranging from 400, let us say, and it goes up to even 850. Eastern Uttar Pradesh will get 800. So average we can say 600 mm per year. Now think of the magnitude, 90 and 600, right? अगर हम fairly हम इसका 20% of it, 20% of 600 goes as a groundwater recharge. That means 120 mm will add into groundwater storage. Now here 120 will be pure water because this is rainwater. Now here, because 90 meter will not have that much impact, because it also depends on the longevity, कितने duration के लिए rainfall हो रहा है. So यहाँ पर तो 20% हम लेते हैं, 20% of rainfall recharge, or in these areas arid region only 5 to 10% is taken as rainfall recharge. Why? Because of the very high evaporation rate. Right? अगर rain वहाँ पर it start raining, so first few mm will not be visible at all because it goes away as soil moisture, right? And high evaporation will take that soil moisture में जाकर के once it is saturated, then only it will move downward
under the influence of gravity. Now recall back hygroscopic water, surface tension forces that are acting, adhesive and cohesive forces in the soil zone or wet zone. Now, अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, I mean, it travels down. I'm talking about the rainfall recharge. If evaporation is high, which is in fact high in arid region, ये recharge उतना effective phenomena वहां पर नहीं है. And reason why the groundwater gets mineralized over the time in coastal areas or in arid region, right? अब वो इतना mineralized हो जाता है, unimaginably mineralized हो जाता है. I will tell you. The contamination from geological oriented pollution or geogenic nature is often unstoppable as the sources lie within the subsurface or out of the reach. That is why it is difficult to employ safeguard measures. बात clear है, समझ आती है? That it is hardly possible to excavate and remove the layer which is having arsenic for example. So it is not feasible. Cost wise is not feasible. और अगर हम उसका engineering design तैयार करें, still it is not feasible that you dig up to 50 meter vertically and then horizontally you excavate. So uska cost, it is unimaginable. You cannot do that, right? So the safeguard measures are difficult. The only thing is left that you need to have some purifiers or water treatment techniques over the surface. For each individual well, or you need to have a community based water purification for that village, and you have a network supply after purification. That could be some of the. Now, common contaminant in groundwater: arsenic and fluoride, sulfate and chloride, nitrate, pesticide, pathogens, organic compound, pharmaceutical, etc. When pollution occurs, when untreated waste is released into the bodies of water, polluted water can cause the destruction of plant and organism living in or around the aquatic ecosystem. But it can also harm the people, plant and animal who consume it. There are four main categories of water pollution. We will study one by one: pathogens, inorganic compound, organic material, and macroscopic pollutant. Now, what are pathogens? Pathogens, all these bacteria, protozoa, or viruses, these comes in pathogens family, and they are very commonly found in surface water, but they also find its way into groundwater as well. Two of the most common pathogenic bacteria are coliform and E. coli. When we say coliform, so this is total coliform, and E. coli is basically Escherichia coli bacteria. Now these are two indicators of bacteria, protozoa, and virus. We'll go through in some other class. But these are indicator parameters. Coliforms are normally present in the environment in safe level and can actually be used to detect other pathogen in water. Coliform एक family है, total coliform, right? इस family में अगर E. coli भी detect होता है, then we can easily say that there is the source is human excreta. The presence of Escherichia coli bacteria usually indicates
that water has been contaminated with human or human waste, right? We encountered actually just Escherichia coli in Dubai, and it's very interesting story. This becomes very you know headache for us, that in desert there is no one, right? In desert there is no land use actually, but in the monitoring we find out that some of the wells, they were contaminated by Escherichia coli. So it turns out to be point pollution or non-point pollution. यस बताएं। नॉन पॉइंट पोल्यूशन। और कोई ट्राई करें, फिर से डेफिनेशन पर जाएं पॉइंट और नॉन पॉइंट की। It is not widespread, it is easy to identify. So because it is there where there is no land use, so it turns out to be point pollution. Because this is not widespread, this was limited to some of the wells. Okay, अब होता क्या है that in deserts people have their farmhouses, right? In farmhouses they used to keep labor coming from Pakistan, India and some other countries. 3-4 people, they are just living in the farmhouse. I mean उन्होंने खेत टाइप कोई बना लिया है, slight farmhouse. Locals, the local owners, they visit like at weekend or वो वहाँ enjoy करके they go away. जो लेबर था वो वहीं, अब लेबर के लिए they do not construct proper the toiletries. So because of the lavatory और ऐसे ही उन्होंने यानी गड्ढा खोद के they made septic tanks. Septic tanks were not properly constructed. So because of that, this Escherichia coli entered into groundwater. This became very hot issue. So we took it to the city planning. So planning is responsible to give permit or to allocate the land for irrigation or agricultural use or farmhouse use. So then on our recommendation, they changed their condition that you will be only given permit to have a farmhouse if you will have a proper waste collection system or you will construct lavatory facilities. So this is how E. coli, they are associated with human excreta or waste. Inorganic material in particular heavy metal like arsenic, mercury, copper, chromium, zinc and barium. Small quantity में they are harmless, but as slightly more or small, कितना small, 0.001 milligram per liter, that may be 1 microgram per liter, right? Itna small. Although sodium you can take 100 milligram per liter, sodium. Chloride you can take 200 milligram per liter or 250 milligram per liter, right? But chromium you cannot take 0.05 more than that. It is cancerous. So this can be due to leaching from इनका concentration कहाँ से होता है, they end up concentrated in water. This can be due to leaching from waste disposal, increased human activity or industrial accidents. So if there are industrial area, right? Now industrial areas are those large extent areas which are allocated for industrial usage. जैसे कि अब दिल्ली और NCR region में government is trying to reorganize the land use in a manner that जो अब हमारे यहाँ तो मिक्स लैंड यूज होता है, कोई भी कहीं फैक्ट्री खोल करके शुरू हो जाता है, but it should be well organized.
तो उसमें क्या होता है कि it is easy for environmental authorities to monitor, to keep check on the waste material that is, or effluents that is, or how it being disposed of. In developed countries, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में इंस्पेक्टर विजिट करता है, एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर, एंड एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर आस्क फॉर the waste disposal certificate or the receipt. इन जो इंडस्ट्रीज होती हैं, they take their waste, transfer it to the landfill. लैंडफिल उनको, जब वो वहां लैंडफिल में डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो लैंडफिल उनको कोई उसका सर्टिफिकेट या एक रेसिप्ट देता है that this much of waste is received from this industry. So that industry has to put that into their record. Once an environmental officer comes in, they need to check on this. So इस तरह से environmental safeguarding होती है, environmental control होता है. Not like कि कोई इंडस्ट्री बनाया and you just start throwing your effluent, liquid or solid waste somewhere next to the stream, और किसी नाले में डाल दिया. नाला of course finally will meet the natural drainage. Natural drainage will finally go to some big river like Yamuna or Ganga. So this kind of water pollution, especially in higher concentration, can cause severe health problem in human and other organism up to and including death. Organic matter, these material contains molecules that have carbon in their structure. ठीक है, कार्बन होने की वजह से उनको ऑर्गेनिक कहते हैं. One of the most frequent detectable volatile organic chemical is methyl tetrabutyl ether, MTBE. MTBE formerly used as an air cleaner gas additive, which is now a banned chemical. It will take years before MBT is thoroughly removed from contaminated water system. Water contaminated with this organic chemical can cause leukemia, lymphoma, and tumor in the testicle, thyroid gland, and kidney. Now there are some macroscopic pollutant. Macroscopic, as the name suggests, they are visible items in waterways or bodies of water. The first common pollutant is trash, especially plastic waste. Plastic waste is often thrown directly into large bodies of water. This is mainly about surface water we are talking with. Surface water bodies, river system, lagoons or seawater. But this can be traced back into groundwater. Studies are being done to find out plastic content in groundwater, because that can be minute, which can go with the percolating water. Other type of macroscopic pollutant include hurdle, a small plastic pellet, piece of wood, metal, and even obvious thing like shipwreck, shipping container. So all they are talking about. Now, groundwater contamination from man-made environment. Septic and sewerage system. See, the efficiency of septic and sewerage system is always questionable, right? As you have in developed countries, these are properly monitored and constructed on good material. So septic tanks, although they are common source of groundwater contamination, and poor construction, lack of periodic maintenance often leads to contamination of groundwater resources. ठीक है, अब क्या क्या कंटामिनेट करता है ये? From septic system, bacteria, viruses, nitrate, detergent, oils, and chemicals. Sometimes cleaning of septic system, cleaners containing synthetic organic chemicals such as trichloroethane or methylene chloride contaminate water supply wells
and interfere with natural decomposition process in septic system. So, as a preventive measure, what is being suggested that there should be a distance from the supply well and the septic tanks or the sewerage utilities. इनमें और groundwater wells में और supply wells में there should be a fair distance. Sewage containing of organic matter, inorganic salt, heavy metal, bacteria, viruses, and nitrogen. So they are pool of the pollution, and they can contaminate water with all these. Now in recent past, जो अभी ये स्वच्छ भारत अभियान और इन सब में जो एक स्कीम में गांव में लेबोरेटरीज बनाने का जो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला, अब उसकी वजह से भी there are studies which are indicating groundwater pollution because of the poorly constructed septic tanks. So this may cause groundwater contamination, mainly within nitrate pathogens, bad odor, and color change. Waste disposal, solid waste disposal. अब हम पढ़ रहे हैं groundwater contamination from man-made environment, right? So from man-made environment, we have gone through septic and sewerage. Now waste disposal, improper waste disposal is always lead to groundwater contamination. Now, जैसे अभी शुरू में बात हुई थी that waste generation itself is not causing harm on groundwater, but the unscientific treatment of the waste or unscientific disposal of waste is actually causing. Right, so यहाँ पर एक दो बार ये बात जो मैंने कही है, to make up your mind that see, development cannot be prevented. Just saying that we need to protect environment. Any development project will cause environmental degradation, but this intensity of environmental degradation can always be minimized or nullified using civil engineering or safeguard approach. So so we need to focus on that as well. We cannot simply say that this is the, आप कहीं professional life में जाएंगे, job में जाएंगे, you will be given project, so you cannot blindly say that no, this is not possible because this is always harmful and will lead to groundwater contamination. So engineer will come to fight you. तो इंजीनियर का और जियोलॉजी वालों का हमेशा झगड़ा यही रहता है that इस जियोलॉजी वाले will come up with a straightforward answer, no, we cannot go ahead because it is, we have read in our MSc that this is the source of pollution. अब इंजीनियर कहता है ठीक है, source of pollution तो है, but we can always prevent it. Now you will say how you will prevent? There is no chance of prevention. So वो एक fight रहती है. So you need to find out a middle way. Landfill. Waste landfill is routed to the landfill site where it is separated. अब landfill जो है वो designated place होते हैं जहाँ पर waste collection होता है, separate होता है, segregate होता है, and finally process होता है. Now this is a burning field जो environmental sciences में waste disposal को फोकस करके बहुत से लोग डिसर्टेशन और PhDs करते हैं. So they concentrate on this, that how the segregation, separation of the waste and how it can be processed into raw material which can be make more useful form. For example, उसके bricks बना सकते हैं या कुछ और ऐसा material बना सकते हैं. Okay, so these plants
convert waste into many meaningful and usable items. But we will stick to the landfills. So there are 4 and 5 types of landfill in an urban area. Yes, लैंडफिल का मतलब ये नहीं होता कि एक लैंडफिल है पूरे शहर में और हर तरह का मटेरियल आप उसमें लाके डंप कर देते हैं. नो, सैनिटरी लैंडफिल, लैंडफिल which receives only sanitary items. Municipal solid waste, construction and demolition waste landfill, industrial waste landfill, and finally we have hazardous landfill. Now इनका डिफरेंशिएशन करना जरूरी इसलिए है that इनका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर वो अलग अलग होता है. Now depending upon the severity, severity को हिंदी में क्या कहेंगे? कुमेल, severity समझते हैं? severity, how severe it is. I mean, it's just something related to the high. I'm audible. You are listening or you went away? Yes, sir. You are there. Okay, good. So depending upon the severity, तीव्रता, है ना? घातक, हाँ. So depending upon the severity of the waste material, construction waste, general waste, hazardous waste, medical waste, industrial waste, new landfills are required to have clay or synthetic liners. ये एक चीज हो गई. दूसरा चीज है लीचेट कलेक्शन सिस्टम. ये दूसरा कंडीशन हो गया लीचेट कलेक्शन सिस्टम टू प्रोटेक्ट ग्राउंड वाटर एंड ऑफ कोर्स द सॉइल. Older landfill, however, do not have such safeguards. Older landfill were often sited over aquifer or close to surface water. If you recall back on Friday, we were going through site selection procedure. तो इसलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से पहले प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टेज होता है, जिसको कि कहीं कहीं पर स्कोपिंग स्टेज भी कहते हैं. उसमें साइट सिलेक्शन किया जाता है. साइट सिलेक्शन, अब ऑफ कोर्स अगर आपको दो कंडीशन मिले जहां पर ग्राउंड वाटर शैलो है और जहां पर ग्राउंड वाटर डीप है, so which part you will prefer for the landfill? Of course the deeper one, right? जहां पर ग्राउंड वाटर डीपर है उस जगह को आप प्रेफर करेंगे. ओके, अब सेकेंडली वेयर यू विल प्रेफर अ लैंडफिल जहां पर ग्राउंड वाटर क्वालिटी गुड है और जहां पर ग्राउंड वाटर क्वालिटी ब्रैकिश है. ठीक है, ऑफ कोर्स you will select the area where groundwater quality is brackish, right? Now thirdly, where you will prefer, where it is in the middle of the city, or you will prefer away from the city, where you will prefer close to a surface, big surface water bodies, or away from it, where you will prefer, if it is a slopy area or if it is a flat area. So all these logical criterias you need to develop once you join some consultant. These are all part of your job. So these things you can. अच्छा, old and abandoned landfill pose a groundwater contamination threat. जो फुल हो जाती हैं लैंडफिल्स, फुल हो जाती हैं तो फिर उनको अबेंडन कर दिया जाता है. अबेंडन करने का एक तो तरीका यह है कि आप ऐसे ही अबेंडन कर दो, है ना. एक अबेंडन करने का तरीका यह है कि यू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर टू अबेंडन दैट. लैंडफिल शुड बी कैप्ड. प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? लैंडफिल शुड बी कैप्ड with an impermeable material, therefore closer to prevent the leaching of contaminant by precipitation. बारिश के बाद का पानी से उसको बचाना, कैप करना और उसको कॉर्डन ऑफ करना, उसको एरिया यानी उसको चार दीवारी करना और ऊपर से उसको ढक देना. तो ये कुछ इस तरह के उपाय हैं जो हैजार्डस लैंडफिल को जब अबेंडन करते हैं तब उसको किए जाते हैं. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. Industrial effluent often contain pollutant which can pollute land and water.
environment. Various industrial effluent include hydrocarbon, heavy metal, phenol, benzene, xylene, petroleum solvent, tetrachloroethene, methyl chloride, etc. सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की जब आप मॉनिटरिंग करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, वो आपको वेस्ट वाटर में बताया जा चुका दैट सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है। एफ्लुएंट के माउथ से की जाती है या जो उनका फार अवे है एरिया उससे की जाएगी, हाईली कंसंट्रेटेड या जो उसका आपको नेचुरल और एक्चुअल उसका इफेक्ट और द कंसंट्रेशन का जो एक्चुअल नेचर है वो कैच करने के लिए कहां से आप सैंपल करेंगे। माय क्वेश्चन इज क्लियर? शहबाज आप आंसर करेंगे? आर यू देयर? यस सर। आप बताएं, कोई भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का सैंपलिंग करने के लिए फ्रॉम वेयर यू विल डू द सैंपलिंग। क्या आप जैसे आप किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जाएंगे एज ए एनवायरमेंटल ऑफिसर, आप वहां के स्टाफ से पूछेंगे कहाँ से सैंपल लेना है? सर हम मतलब जहाँ कोशिश करेंगे कि जो उसका आउटलेट है वहां से सैंपल लें। ओके, क्लोजर टू इट, यस। जो भी एफ्लुएंट है उसका, राइट, जो एफ्लुएंट है, सो वी विल ट्रेस बैक कि भाई एक्चुअल इसका आउटलेट कहाँ पर है। तो जितना क्लोज हम उसके जा पाएंगे उतना क्लोजली हम मॉनिटर कर पाएंगे उसके इम्पैक्ट को। नॉट लाइक फार अवे इट इज दे आर डिस्चार्जिंग। उससे क्या होता है, उससे होता है कि जो हम डाइल्यूशन का इम्पैक्ट है वी विल इवेड द डाइल्यूशन इम्पैक्ट, राइट। अच्छा, और क्या ख्याल करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कुमैल, थोड़ा सा सोचोगे तो बताओगे। दिन के किस हिस्से में करेंगे? सर शाम के वक्त। शाम के वक्त क्यों? सर सुबह से जितना भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, मोस्टली सर जो कंपनी फॉलो करती है 8 to 5 का, ठीक है, तो ठीक है, जितना भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा वो सब वेस्ट पे शाम को ही निकाला जाएगा। सही है। तो उसमें हम कंपनी का जो यानी जो उसका ऑपरेशन है, ऑपरेशन को भी गो थ्रू करेंगे। ऑपरेशन को गो थ्रू करने के बाद में वी विल and also we will check whether the same effluent is also including the the water, I mean general water use in the industry। वो लोग हाथ धोते हैं, नहाते हैं, उनका जो यानी वो सेटअप है उसका पानी भी उसी आउटलेट से जा रहा है। सो यू विल टेक केयर ऑफ दैट। दिन के किस हिस्से में करेंगे इसको डिसाइड करने के लिए यू विल रीड और यू विल गो थ्रू देयर ऑपरेशन। ओके, हम कहाँ थे? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बात हो गई। डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट into surface water bodies is one of the main cause of surface water pollution in India and other part of the world. This way, effluent have far-reaching impact. The spread of scale of pollutant increase manifold along the water course. इसका क्या मतलब है? ये जो हमने पढ़ा इसके क्या मतलब है? यस, अब्दुल खालिक। यस सर। क्या मतलब है इसका? मीन्स जो इफ्लुएंट्स हैं इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में कोई जो है यानी बदमाश प्रवृत्ति का स्टूडेंट है तो उसको मॉनिटर नहीं बनने देना है, ठीक है।
क्योंकि उसको मॉनिटर अगर बना देंगे तो उसको प्रचार प्रसार करने का और मौका मिल जाएगा। सो जो जो बैड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, दे शुड बी चेक्ड एंड प्लेस्ड, शोन देयर प्लेस। उनको पीछे वाला बेंच पर बैठने ही देना चाहिए। ठीक है ओवेस, ये हमने क्या बात कही, ये तो एनालॉजी हो गई कुछ। Let me go back. Discharging effluent into surface water body is one of the main cause. जैसे ही ये surface water में आता है तो इसको यानी जो pollutant है ये far reaching effect हो जाता है, because surface water travels with high velocity, right? And it has far reaching effect. दिल्ली से वो चलते चलते जो है it will come to Bulandshahr, and then it may go up to Mathura, right? And within no time or within less time, like say 10 20 days. But in groundwater it will not travel that much distance in tens of years or more than 50 years, right? Because of the less velocity. So इसलिए सरफेस वाटर से बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एफ्लुएंट को, लेकिन होता उसका उल्टा है। एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, agricultural productivity depends on application of fertilizer and pesticides. In addition to agricultural farm, sports authority and municipalities also use these chemical in their field and recreational park. ठीक है, उसके होने की वजह से they finds its way to groundwater, right? Depending on the soil properties or water table condition. Normally जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती हैं और जो स्टेडियम्स होते हैं वहां पर कोई पंपिंग तो होती नहीं है, लेकिन डेली जो है दे नीड टू वाटर द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रास, फॉर द ग्रास। तो यहाँ पर बहुत जल्दी ग्राउंड वाटर बिल्ट अप हो जाता है। सो बिकॉज ग्राउंड वाटर इज शैलो, सो ये comparatively more susceptible to receive the contamination, accidental spillage of hazardous liquid, petroleum, etc. So जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, they are transported from one place to another place, right? Overturning of tankers, trucks often lead to contamination, और अगर लीकेज भी उसमें हो रहा है। So remedial cleanup of oil spilled or soil or polluting groundwater requires mechanically removed of soil. अब developed countries में होता क्या है, the trucks which are carrying these hydrocarbons, petroleum or hazardous material, okay, hazardous material की कैटेगरी में आते हैं, और hazardous material को जो ट्रक ट्रैवल कर रहे होते हैं उनका जीपीएस और उनकी करंट लोकेशन इज शेयर्ड विद द एनवायरमेंटल एजेंसीज। एनवायरमेंटल एजेंसीज को उनके मूवमेंट का पता होता है, राइट? एंड द मोमेंट कहीं पर कोई ओवरटर्निंग होती है, सो इट इज कंसीडर्ड एज इमरजेंसी सिचुएशन, और दे जो ट्रक होता है they carry along some of the measures so that they can prevent it, जैसे कि foam वगैरह, जो कि quickly you can apply cordon of that area so that the flow will not go to the larger area, और इस तरह के बहुत सारे remedial procedures उनके पास होते हैं। Pollution associated with groundwater wells. Poorly constructed groundwater well may lead to groundwater pollution, right? Packing material is absent or poorly applied. Well site in close vicinity of casing. Well site in close vicinity of well casing become favorable location for groundwater contamination. क्योंकि आपने well head protect नहीं किया, सीमेंटिंग नहीं की, ठीक है, तो उसको पुअरली
वेल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर सकता है। ग्राउंड इंजेक्शन ऑफ वेस्ट थ्रू वेल कैन पोल्यूट usable groundwater resources if proper protocol of waste disposal injection are not followed. कुछ लोग ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट कर देते हैं using pumps. So once they are injected into the ground, and this is done with a proper protocol, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं फॉर ग्राउंड इंजेक्शन ऑफ वेस्ट, राइट। अगर वो प्रॉपरली फॉलोड नहीं होते हैं, ऐसे ही यूं ही कहीं भी आप उनको इंजेक्ट कर देंगे, देन दे विल मीट द यूजेबल और फ्रेश ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, यानी ऐसे भी डिसर्टेशन वगैरह के लिए या आगे रिसर्च के लिए भी। ओवर pumping could be one of the reason associated with land subsidence and consequences of quality deterioration. ओवर पंपिंग से लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, क्वालिटी डिटोरेट हो सकती है। क्वालिटी डिटोरेट होने के लिए फॉर एग्जांपल if you are excessively pumping, so there could be groundwater mixing from the adjoining area or the deeper area, so उसमें TDS increase हो सकता है और ES values, arsenic values are reportedly increase। ये कुछ नॉन इवेंट्स हैं जिसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और आर्सेनिक वैल्यूज, आर्सेनिक कंसंट्रेशन concentrations are reportedly increased due to excessive abstraction of pumping from deeper zone. A high vertical gradient pulls water from less permeable clay, thus promoting arsenic layer release into। अगर हैवी पंपिंग क्या करती है, हैवी पंपिंग से जो है ड्रॉ डाउन बनता है, ड्रॉ डाउन से क्या होता है, ग्रेडियंट बनता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, रिमेंबर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट DH over DL, so hydraulic gradient is nothing but the slope। so slope अगर ज्यादा हो जाएगा, so it is possible even that even aquitard can contribute to the groundwater well, क्योंकि because of the slope की वजह से slope is directly proportional to Q, I mean DH over DL। तो उस तरह से now finally summary ये है कि water quality deterioration through contamination of groundwater result into poor water quality। Sometimes groundwater contamination is so severe that वाटर सप्लाई को बंद करना पड़ता है, अबेंडन करना पड़ता है until it gets purified। In other cases the groundwater can be cleaned up and used again after recycling if the contamination is not too severe। so groundwater clean करने के लिए there are very little chance that you can do it in situ, the ground के अंदर ही आप उसको purify कर दें, ऐसी techniques are very limited options। the only thing is you need to abstract, store it somewhere, purify and then use। तो ये बहुत costly affair हो जाता है। For example, pollution caused by landfill leachate raise the heavy metal methane and nitrate nitrogen concentration, which makes it unfit for any use type। The consequences of contaminated groundwater are often serious। For example, estuaries that have been implicated or impacted by high nitrogen from groundwater sources have lost critical shellfish habitat। Low pH and high temperature threaten coral reef in coastal zone। ये बहुत ही important issue है।
पूरे मिडिल ईस्ट में दे एक्चुअली कहाँ से आती है हाउस होल्ड सप्लाई इन मिडिल ईस्ट? डू यू हैव एनी आइडिया? ओशन से डिसैलिनेट करके। ओशन से डिसैलिनेट करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ओशन से डिसैलिनेशन का जो प्रोसीजर है इसमें ओशनिक वाटर को डिसैलिनेट करते हैं। डिसैलिनेशन के बाद वाटर प्यूरिफाई होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर 100 ml ऑफ ओशन वाटर हम लेते हैं, उसमें से हम प्यूरिफाई करते हैं, तो 100 ml में से जस्ट ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। 100 ml में से 20 और 25 ml प्यूरिफाई होता है, ठीक है, और 70% ऑफ इट बिकम्स ब्राइन, और इसको वापस सी में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो जब ये वापस सी में डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसका टीडीएस हो जाता है 80,000। सी वाटर कितना होता है? 40,000। 40,000 हम लेते हैं, 40,000 को हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद में 10-20% वाटर प्यूरिफाई हुआ, जो पानी बचा वो और ज्यादा मिनरलाइज्ड हो गया, और फिर उस मिनरलाइज वाटर को हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे खाली टाइम में, ब्राइन, ठीक है। ब्राइन एसोसिएटेड विद सी डिसैलिनेशन, ये भी कोई टॉपिक हम आपको दे सकते हैं। तो अब जब ये, अब ऑफ कोर्स 100 ml तो हमने ऐसे ही कह दिया, वो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जो कि डेली बेसिस पर जो है प्यूरिफाई होता है, और डेली बेसिस पर दे डिस्चार्ज ब्राइन इनटू द सी। अब वो ब्राइन क्या होता है? ब्राइन जो है वो आसपास के एरिया को, जहां पर वो छोड़ा जाता है, जहां पर उसको थ्रो करते हैं, वहां पर हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, और उसकी वजह से कोरल रीफ्स एंड फिश now contaminated groundwater require high cleanup cost, high cost of alternative water supply, and potential health problem. Okay, so with this I end up your 4th unit. In case if you want